So, hi everyone, I am Parampreet Singh, and as you all know, I have been taking machine learning practices session and Python revision sessions this term. So, today we are having our last session, not only last session of Python revisions and as well as last session of like overall like this my session series and of this term. So, today we will mainly do the end term revision by doing PYQs. So we will do at least like 2 to 3 PYQs, and like I will solve each and every question with you all. And I want कि session जो है interactive रखते हैं. So like आप लोग भी साथ साथ step wise बताना कि how can we approach a particular question and all. So जिससे बाकी सबको like help मिल जाए. So, and yes, I am recording this session, and this session is being collaborated with GIR House. So, thank you to them for collaborating. And I'll upload the recording of this session in my YouTube channel. Okay, so you guys can subscribe to it. आपको around 3 recording मिल जाएगी. Okay. Now, let's start. So, like we will cover the PYQs mainly, and in PYQs. Okay, I'll open it side by side. Um, this much is better. So in PYQs, we will start with the uh, like let's start with this term 1 2024 PYQ. Okay, so हर एक term में we get like various batches and most of the questions are same, right? So that is इसलिए I'm only considering one mainly the okay यहाँ पे है नहीं. So I'm considering only one set. Okay, जिसमें we will do the PYQs of each session. यहाँ पे we have this. The questions, okay, questions are visible now, like the font size and all. Okay, and if you guys like can speak, that is more better. Okay, so start करते हैं. First question is like it is an MCQ and we have to tell what will be the output for this question, and it is a recursive function. So let me just directly copy the take the screenshot and paste it here. Okay, yes, so this is like term 1 2024 end term exam and exam paper, and this is the first question. So some function of L. So this is a recursive function. How? क्योंकि हम same function को call कर रहे हैं. ठीक है? You guys can see here. Now एक एक करके हम ना एक एक केस देखते, जैसे हमारे पास लिस्ट दी हुई है. We will consider this list only, but एक एक केस देखते हैं. So बेस केस जो है यहाँ पे ये है, if len of L is equals to 1, then पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी. That means अगर एक एलिमेंट की लिस्ट पास हो रही है, so that will be returned directly. Okay, so like if I write parameter and argument, sorry, not argument, return value, so that will be returned directly. Yes, Vedant? Hey, Param, like your voice is getting lit muffled. Like network का ये लग रहा है lag हो रही है थोड़ी blurring है. Okay, is the voice lagging for everybody? Yes. No. Okay, I think आपकी side से issue है. Okay. Sorry. Alright. Probably No on problem. mine. Okay, so alright, so this is a recursive function. We have like various conditions here and all, but first what we will do is
we have to check what will be the output for this specific input. Okay, if we call the function in by passing in this input, we have to check the output kya hoga. And let's consider the base case first. Okay, so the base case is if the length of list is 1, that means if there is only one element, it will return it directly, whether it be 1 or whether it be like 7. I'm not like currently going to a specific element ki kahan kaun sa element aayega. No, I'm just like directly uh, running it. Okay, so then the second case is if L of 0 in L1 to till end, then some function will call on this last part. Can anybody like tell me what this part is doing? It will check if the number is in the later part of the list. If it is there, then it will return the rest of the list. Right. So if we pass in a list, okay, I'll consider this list only. मैं पूरी list नहीं लिख रहा. So 1, 5 and let's say मैंने पूरी list I have passed here. So what it will do is it will return this part. That means it will remove the first element which is in the 0th index, and it will consider rest of the elements. So 5, 4, 3 till 7. Okay. So this will be the output for this. ये तो सबको clear हो गया इतना part. Okay, now this the last return statement, and here the list is not being returned, the function is being called. So जो sum function है, so ये that same function will be called, but on the like the rest of the list. Okay, excluding the first element. If the first element is already present in rest of the list, that's why. So now we will check for this. So return L of 0. Okay, we will go to the like the conclusion, but abhi let's like check ki code kar kya raha hai. So in return L of 0, so in return L of 0, what it is happening, it is returning. Okay, what is this, what is the type of this particular part? I think it will include the first element. Yes, first element. Okay, the type is list, of course. So the type is list means abhi just the first element is 1, so it will take that account in list, and plus what it will do, okay, I'll not write it here. So what it will do, it will like take that particular first element and then call the sum function on rest of the list. Okay, so अभी के लिए let's run through this list. Okay, अभी यही input के लिए हम देखते हैं कि what can be the output. So सबसे पहले tell me, is this condition true for this particular list, this whole list? No, right? Now is this condition true? Second condition. Let me write Yes. 1 and 2. Okay, the second condition is true, which means हमें first element को ignore करना है and we have to consider the rest of the element. That means we will have a list something like 5, 4, 3 till 7. All right. Then and 7, and यहाँ पे it is being like it is calling the same function again, some function. So that means we will go into this particular list. Now based on this list, okay, let me write it here. Based on this list, now tell me ki which condition is true. The first condition is true. Is the first No. condition true? No. Is the second condition true? Second is true. So second is true how? Because 5 is here and 5 is here as well. Okay, then it will take this part of a list. Okay, like 4, 4, 3, 2, 1 till the variant 7. Okay, and there also it will call some function. Then we will like again go into this function call and we will check. So the first condition is false here again, and then the second condition 4. So the 4, if you see, 4 is already here, and similarly it will call the same function again, some function, but on the rest of the list. Now can you see the pattern? Like this pattern will like go till this pattern will be the same for 3, for 2, for okay, yeah, for 2 till, है ना?
2 तक पैटर्न विल बी सेम. एंड जैसे लाइक हम पास करेंगे अ लिस्ट फ्रॉम हेयर, तो 2 जो है यहाँ पे होगा इन द लिस्ट, सो देन सम फंक्शन ऑफ L1 विल बी रिटर्न, विच मीन्स हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी 1 2 1 3, इफ आई राइट इट हेयर 1 3 2 4 3 5 7. Okay, now tell me which condition is true. Okay, is the first condition true here for this These are particular? not true. Yes, this is not true, and second is also not true. Now see, दोनों conditions true नहीं है, so last return statement execute हो जाएगी. Okay, last return statement में what do we have? We have an element, the first element, plus we are calling the sum function list but on the rest of the list. That means हम इस particular list पे we are calling the sum function. अब okay, one तो we have here. Now let's ignore this one as of now. Let's keep it aside. Now tell me on this part of a list. इस पे what about okay, इस पे we have this. Okay, now tell me, is the first condition true? No. Second condition is true? Yes, second is true. So what it will do is it will return the second list here, and it will return the function call. Okay, यहाँ पे भी function call थी, यहाँ पे भी function call. Now this is the function call, and now if we see, okay, थोड़ा सा, okay, fine. So now if you see, तो इस function call के बाद the first condition is still false. The first condition is to check the length, whether it is 1 or not. Second condition is also false because the element at 0th index, the first element 2 is not in the entire list, so we will go for the last return statement. That means यहाँ पे we will have 2 plus, and then the function call will happen on this particular part from, if I write it like 4 to 4 3 5 7. Okay, then यहाँ पे call होगी, and यहाँ पे भी length of list is not 1, it is not in the entire list, then it will take that particular element. Then for the same 3 as well, and same for 5. Now when it comes to 7, जब हम 7 पास कर देंगे like sum function में, that means हमारी जो list है वो अभी 5,7 है, and उसमें से 5 हमने extract करके यहाँ लिख दिया, and 7 हमारे पास बचा. तो 7 हम एक list पास कर रहे हैं, so यहाँ पे first condition is true, which is to check the length, whether the length is 1 or not. So length 1 है, then यहाँ पे directly 7 return हो रहा है. So now can you guys like see, okay, now we have to just sum this. So sum will be 5 3 8 6 7 15. Okay, okay, 7 7 14 and 14 8, so the sum will be 22. Okay, sorry, not sum, मैं confused हो गया. It is like adding up the जो है ये, yeah, list is adding up, so एक unique list बन जाएगी. That will be 1 2 4 3 5 7. Okay, this will be the list, and this is basically having all the unique elements, right? We can see here, and this is the logic mainly of this function. This sum function is to find the unique elements of the list at their like last occurrence, we can say. Okay, based upon their last occurrence. So ये code clear हो गया सबको, what this is doing, how it is working? All right, see, the way I am doing is कि जैसे मैंने एक एक base case के check किया with the same input, same way you all have to do in the like rough sheet, okay, during exam, and आपको clear हो जाएगा 1 2 4 3 5 7, the same output we are getting here. Now let's move on to the second question. So okay, now we have an object-oriented programming question. Check cooling is a method of the class air conditioner. Okay, what is a method? Like method को मैं एक general एक name भी है programming. Yes, function. So method is same as function, but if we write function in a class, we call it as a method. Then
is a method of the class air conditioner that updates the attribute cooling required. Okay, and to the boolean literal true if the current temperature is above 28 degrees Celsius, indicating the cooling is required, and false otherwise. So this means अगर current temperature 28 से ज़्यादा है तो it will set cooling required to true. If it is not, then it will set cooling required to false. We have to select the correct implementation. Okay. Now जिसको if you guys know what object oriented programming is, or like if you have like attended my last session, so you all know कि if whenever we write a method inside a class, that will take the instance as a first parameter, right? And जो यहाँ पे self है, this self particular thing, I hope आपको cursor दिख रहा होगा, this self is the instance जो हम pass कर रहे हैं. Okay, so second function तो like second code तो directly wrong हो जाएगा, है ना? We are not passing any self here and the instance here, and it is using that instance, so it will return multiple errors. Then if the attribute current temperature, okay, so attribute whenever they write attribute ना, consider कि वो attribute या तो instance variable है या तो class variable है, doesn't matter, but वो attribute उस particular instance से relate करता है. That means we have to write self dot. if अगर attribute लिखा है ना, that means self तो लगेगा ही लगेगा with the that variable name. Okay, so because we call them as an attribute only, now we have to just simply check for this condition. So here it is written if the current temperature is above 28 degrees Celsius. So the first condition is true, like अभी तो बाकी तो condition है कि अगर current temperature 28 से ज़्यादा होगा then cooling required will be true, if not then cooling required will be false. And now if we check for the third, so यहाँ पे current temperature it is considering as a variable, not as an attribute. Okay, so that's why it is wrong. And in the fourth also it is considering cooling required as a variable, not as a attribute, so that is why it is also false. The first one is correct. Okay, the main thing here is we are passing the instance, and attribute means उसके साथ self लगेगा, ठीक है? So this is like you can consider. Okay, now let's move on to the next question. This is a list comprehension. well ये तो सबको आ जाना चाहिए, easy है काफी. Okay, let me write it, paste it here. Okay, so list comprehension, how to read a list comprehension. Okay, the main thing is that first read the loop. Okay, read the first loop, जो भी हमारा सबसे पहला loop आता है in the list comprehension, read that particular loop. Okay, so this loop, what this loop is doing, this loop is generating numbers from 1 to 1 to 10 or 1 to 11, 1 to 10, right? 11 is not included. Now after that, see till 4 it is. Okay, यहाँ तक ये loop. Now if you see, the rest is the part for appending what we have to append. And यहाँ पे जो append करना है, if you see we have a condition like if else condition, and how it is working, अगर if condition true होगी then this will be appended to the list. अगर if condition will be false, that means else is true, then this part will be appended, that is 2 into x. Okay, so it means if I write it in a normal manner, that will be okay for x. If I write in a normal manner, let me use this one, it will be something like this. For I in range, yeah, for I for I in range 1 comma 11, and then if x mod 2, if x mod 2 equal to 0, then it will append, okay, let's say L नाम की list है, it will append x का square, else it will append L dot append 2 into x. Okay,
So this is how we can read it. First read the loop, and loop देखने के बाद then go for this condition. Now you all are clear कि what this list comprehension is doing. Okay. Yes, give exponential order of 2, or like the square also we can say. Then now what we have to do is we have to like print what will L contain. So okay, before that L, let's see x पे हमारी क्या क्या values आएंगी. We will have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now you guys tell me for each of the value हमारे पास क्या list बनेगी. For 1, which condition is being satisfied, if or else? Yes, तो यहाँ पे 2 into 1 हो जाएगा, which will be 2. Then 2 for the 2, if condition will be satisfied, and because this number is an even, so here it is checking if the number is even or odd. Okay, if the number is even, it will like have the square, so 4, and for the 3 it will have 6, 4 it will have 16, and okay, not here 25, here it will have 10, and then 36, then 14, and here it will have 64, and 9 to 18, and then 100. Right? Is it clear what this list comprehension is doing? All right, so till now we have done these questions, and we just have to match कि कौन सा work कर रहा है. See, whenever we have to check the output ना, don't read the options at all. मैंने एक भी option नहीं देखा था अभी. I have just like checked the code. मैंने code को खुद execute कर लिया. I got my output. Now I have to just check the output, compare the output with all the options. Okay, this is how you should do in the exam as well. जल्दी भी हो जाएगा, आपको confusion भी नहीं होगी. And now we will have this file handling question. बहुत basic सा question है. Okay. एक फाइल ओपन हो रही है output.txt नाम की, and in write mode w means write mode. that means हमें लिखना फाइल के अंदर we will add something, and जो पुराना कंटेंट होगा ना, it will be removed. What if we want to keep the old content? Then हम कौन सा मोड यूज करते हैं? If we want to keep sorry, append. Yes, we will use append mode. That is, we will write a. Okay, a for the append mode. Make sure आप append मत लिख के आना. If they ask, or if they ask to select, don't select the append word, select only a, and same way select w. Okay, don't select write. Yes. Then we have a write function for that particular, for the file. If we are opening it in a write mode, then we can write various elements, and write जो है basically एक string लेता है, and it will write that string as it is. Okay, so it will not create any kind of new lines. Like here we are calling f dot write apple, and then f dot write banana, right? So what it will do is it will first write apple in this first call, then in second call it won't write banana in next line, rather it will continue banana in the same line and without any spaces. Okay, so कोई space भी नहीं होगी, कोई new line भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, just that directly it will write. And same way for all cat, dog, elephant, and then we are closing it. So they are asking what will be the content of this file after executing the code. So space नहीं होगी, new lines नहीं होंगी. These all three options are incorrect, and the first option is correct. Is this clear? Mainly you have to like, you should know like what write function will do, how it works. So that is it. Now we have an interesting question. Okay, so the question is, we have a library maintains a database in the form of list of dictionaries. So this is a list of dictionaries. Okay, okay, अब मुझे बस एक इतने सा बता दो. If I want to get this 1984, how can I get this? Like, how can I access 1984 from this records list of dictionaries?
records 0 title. Yes, and title should be in strings. Okay, that is it. So we will get this. So matlab I just want to clarify कि you all are able to like check कि हम element कैसे access कर रहे हैं. Then what we have to write a function named get longest book that accepts the list and retrieve the book with most pages from the database. Okay, so सबसे ज़्यादा pages किस book के हैं? We have this one 1984, right? With the pages 328. So if we pass in this records list of dictionary, we should get we should get this 1984 book, or what we need, like accept the list records and retrieves the book with most pages. The function should return a dictionary containing the details of the longest book. Okay, so it should return whole dictionary. इसको name या सिर्फ that maximum pages नहीं return करने, we have to return the whole dictionary itself. Okay, the whole element for the list. You can assume the longest book is unique, so that means एक ही book होगी जिसके सबसे ज़्यादा pages हैं. So what should be an like normal approach will be, if I like paste it here. So this is the record dictionary. We have to create a function named some longest something. Okay, def longest something, which will simply take these records and it should return the whole book details. That means the whole dictionary, which is having highest pages. So highest pages here are 328, right? Maximum pages, and we have to return that only. So what we can do, checking max pages and maintaining variables. All right, if I like have a max name variable, max pages variable, at starting if I set it to 0, and then what I will do is I'll run through a loop. Let's say for I in records, yes, if like I of pages is more than max pages, then I will set max pages to I of pages, right? ये logic तो clear होगा. That is the logic if we see here in दोनों पे, right? Max pages and all. Now they are asking we have to return a dictionary that contains the details of the longest book. That means हमें पूरी dictionary return करनी है, हमें max pages नहीं return करने. So at first, like, there are many approaches, so let's go with these snippets only. So if we check the first snippet जो है max pages तो ढूंढ रहा है, it is identifying max pages correctly, but it is not like giving us a dictionary, it is only giving us the maximum pages, right? So this snippet is wrong. Okay, because we want the details of the longest book, we do not want only the maximum pages, we want the dictionary. Now what it is doing, the second snippet, it is finding the maximum pages, then जो भी maximum pages है ना, it will again iterating to the dictionary, the list of dictionary, and it is checking कि कौन से record के कौन से dictionary के pages maximum pages से match कर रहे हैं. Okay, once we have 328 in maximum pages, it will only match with the first dictionary and it will directly return that particular record. Okay, that means it will return the first dictionary itself. So this is it, and if you see output is yes, only snippet 2 is correct. Yes, first is not correct because we are returning it is returning only maximum number of pages, it is not returning the details. Okay, is this clear to you all? What is Sir, I have it out. Yes. So suppose we have another data in which we have two same number of maximum pages. Okay. So how we can modify the code Yes. in snippet 2? All right. So here the thing is like the longest book is unique. Okay. And what they can ask is like if there are multiple books having the same number of pages, let's say maximum pages, दो books के हैं 328.
then they might ask कि first occurrence वाली book return कर दो, then we will have the same code directly. Okay, if they ask for last occurrence, then what we can do is we can maintain a variable name like max book details. Okay, and that variable at initially we will set to none. Then we will have this loop for records, for record in records, and there we will like this loop, the second loop. And जब ये condition satisfy होगी line number 7, when line number 7 will satisfy, like when this if condition will satisfy, then what we will do is we will set this variable max book details to that particular record. Okay, we will set that particular record to max book details, and then at the end after the for loop we will return max book details. If they are asking for first occurrence, like जो सबसे पहली book मिलती है, then this code is fine, this code is working. Okay, if they ask for the last occurrence, then you can set a variable and you can assign the book one by one, the record one by one, whatever it is matching, and the last one will be added to this one max book details. Yes, condition में भी थोड़ा सा change होगा. Condition में change क्या होगा? Okay, not in the sorry, okay, sorry, condition में change नहीं होगा. Well, condition में change नहीं होगा because क्योंकि we are checking the maximum pages only. So maximum pages, like अगर दो books के same है, that is fine, condition में change नहीं होगा. Yes, so is it clear, Ashish? If they ask to return both dictionaries, then we can maintain a list, right? We can create a list like maximum books and a list, and whenever this condition is being satisfied, we will append that particular record in the list. Okay, so is this clear to you all? Yes. Okay, now let's move on to this next one. Now again they are asking for the output. तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे PYQs कवर करने हैं. Okay, what is A? What is the type of A, B? Is this a dictionary or set? Yes, A, B, C, all are set. What we are doing here is, see, we have this set, we have this set, we have another set C. What we are doing is we are iterating through the set A and we are adding each element in the C. Okay, so C is similar to A, right? Can I say this after this loop? Can I say this कि C में elements same होंगे जैसे A में elements हैं? Okay, now in the second loop, what we are doing is we are going through B and we're checking if X in C, then we will remove that particular element from C. Okay, yes, symmetric difference. That means जो भी elements basically C को अगर आप maintain करो या नहीं करो, that is up to you. It is mainly checking कि अगर कोई एलिमेंट जो B में एलिमेंट्स हैं अगर वो A में आ रहे हैं तो हम उनको A से रिमूव कर देंगे. That means हम 2 हटा देंगे. We will have 4, no. 5 here, no. Do we have 7 here? No. Do we have 8 here? No. We have 15 here. We will remove this. Do we have 25? No. Do we have 30? No. Okay. Yes, it is just a bare difference. Now जो resultant आएगी, that will be 1, 3, 5, 9, 11, 18, 24. All right. Is this clear to you all? 5 is also common. Sorry, yeah, 5 is also common. Sorry. So 5 will also be removed. Now, is it clear? What will C have? बहुत basic से loops हैं. Yes. Now we just have to match the output. That is fine. Consider the following snippets. L dot append 4. That is fine. Okay. Is the second code possible? No. Why? Because C is a tuple.
Yes, it is a tuple. We cannot modify the tuple. Second code will give us an error. First code will run directly. That is fine. Execute successfully. And same for the third code. Third code is a dictionary. We are accessing the value of third. And then we just have to check code 2 will throw an error in line 2. Code 3 will run without any error. अगर code 1 के लिए भी same होता, then we will select the same line for that as well. Same option. ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन. It is clear to all, right? Yes. Now we have this. Okay. This is some interesting question. Select all matrices for which the function returns the value true. What I will do here is, okay, let's check the code now. So in code we are passing in a matrix. What element n क्या store करेगा? Number of rows or number of columns? Okay. N will store number of rows in the matrix. Okay. And then we are iterating through each row, like for I in range n, for j in range n. Let's consider that matrix is a square matrix. Okay. Because we are iterating, we are having I and j both. Okay. So matrix square होना चाहिए. First condition will is matrix should be square. Okay. Only square matrix, for square matrix it will work. If the matrix is not square, that means अगर number of rows and number of columns different हैं, then it will result in an error. Then what they are checking is like if I is not equal to j, that means if we have a matrix something like this, 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Yes, I'm just adding an example. So is this a square matrix? Yes, this is a square matrix. Now it is checking for I and j. So I and j, these are indexes, not elements. If the indexes are not same, मतलब at first तो both will have the same, and basically at diagonal elements this condition will be false. Okay, this condition will be true, this condition will be false. At diagonal only the indices are same, right? For this indices is like 0, 0. For the 5 index is 1, 1. For 9 index is 2, 2. है ना? If we go for zero based indexing, and what here it is doing, it is considering only non-diagonal elements. That means 2, 3, 4, 6, 7, 8. And it is checking if m of I of j is not equal to 0, return false. That means जितने भी non-diagonal elements हैं, अगर वो 0 नहीं है, like कोई भी अगर non-diagonal element 0 नहीं है, yes I will share this PYQ, अगर वो कोई भी non-diagonal element 0 नहीं है, like first it is checking non-diagonal here, then it is checking if it is 0 or not. If it is not 0, then it will directly return false. That means the second condition is non-diagonal should be 0. Right? Is this clear? इतना clear है सबको? Non-diagonal should be 0. Now third, diagonal elements. For the diagonal elements, it is checking कि सारे diagonal elements like different हैं या नहीं with the first element. That means जो हमारा m of 0 0 है. Okay, for this matrix, what will be the value of if we check this particular part? 1, right? यहाँ पे value आएगी 1. What it is doing is it is checking all the diagonal elements. If अगर कोई भी diagonal element first diagonal element के साथ match कर रहा नहीं कर रहा, then it will return false. It means all diagonal should be same. All diagonal elements should. So ये condition पे थे, right? In the third condition, what the third condition is checking for diagonal elements.
and that diagonal element should match the first diagonal element. Yes, all diagonal elements should be same as the first diagonal element. If I see, basically the first diagonal element not be equal to not like that, like ये opposite हो गया. If the first diagonal element is not equal to other diagonal, that will simply return false. They are asking like when this function returns the value true, so we want to check for true. Okay, it should be equal to, so that means all diagonal elements should be 0. So diagonal elements कब 0 होते हैं, like when we when we have a diagonal matrix, right? Let's say we have a 3 by 3 diagonal matrix, then only the non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements should be same as first diagonal elements, or we can say all diagonal elements should be same. Okay, so that means this is a scalar matrix. Okay, in scalar matrix we have the diagonal elements as same, and here if we see the first, it is a scalar matrix. This is the first diagonal element, this is the second diagonal element, this is the third diagonal element, right? ये option clear है सबको? Is this first option clear? Then in the second option is a 4 by 4 matrix. This is also fine. Now like it is the scalar matrix and have the value 5, and the third one is having different diagonal elements. Okay, तो हमें जो है वो सारे inputs के लिए चेक करना है, जिस input के लिए it should return true, and it will only return true for those who are those matrix who are square, those matrix which are square and their non-diagonal should be 0, like the non-diagonal elements, these elements should be 0 and their diagonal element should be same. That means the matrix should be a scalar matrix. How many of you have done maths 2 or have maths 2? Okay, so that means आपको पता होगा scalar matrix क्या है, right? Scalar matrix is a matrix where we have all the non-diagonal elements are 0 and all the diagonal elements are same, like जितने भी diagonal elements है ना वो same होते हैं. That is a scalar matrix and that only we are checking. In the third option if we see, हमारे पास 0 तो है non-diagonal elements, but we do not have like same diagonal elements. You can see like 1 2 3 4, all elements are distinct, right? So this is not a scalar matrix. And then the fourth one, this fourth one is like not a diagonal matrix directly. Okay, क्योंकि यहाँ पे और भी elements हैं, like we have the one here as well, so we are having a cross diagonal element here as well, so that is why first two options are correct. Now let's go for this. If M is a matrix, M into N matrix with, okay, so what this first line says, is this represent like matrix is a square matrix or non-square? Yes, it is a non-square matrix. We wish to calculate the sum of each column and stores the sum in a list called column sum. Okay, it means they are asking कि उनको हर एक कॉलम का सम चाहिए and हर एक कॉलम के सम को उसको we have to store it in column sum. And yes, rows are not, number of rows are not same as number of columns. Then we have to check which one is true. So सबसे पहले ना go for the normal one. Okay, if you are not that much familiar with list comprehension, okay, go with the normal loop. So हम normal loop का देख लेते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं. M and N we are extracting. M is having the number of rows, N is having number of columns. Okay, then the column sum we have defined. Okay, fine, this is fine, right? We have to get a list of column sum, so this is fine. Then what we are doing is for j in range n, that means हम एक एक कॉलम के लिए जाएंगे. Okay, for j in range n column sum equals 0. For I in range m, मतलब हम एक एक कॉलम पे जाके ना
वहां से हम एक एक पर्टिकुलर रो वाइज एलिमेंट पे जा रहे हैं. That means what we are doing here is, if we have a matrix something like this, 1 2 3 4 5 6. Okay, is this clear? ये मैट्रिक्स होगा, राइट? या फिर ये मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4. Which matrix will work? This A or B? B will work, right? Because we have m not equals to n. Okay, B. And in B, what we are having a column sum list where we have to store the sum of columns. Okay, and what we are doing is we are doing for j in, like here if you see, for j in range n. J in range n, that means each column we are, like, index of each column we are accessing, that is 0 1 2. Then we are having a variable csum which will store the column sum. Then we are iterating through each row. Means, let's say if j equals to, if j is 1, sorry, if j is 0, let's say the 0, if j is 0, then हम एक एक like row wise ऐसे element पे जा रहे हैं. For I in range m, सबसे पहले हम ये लेंगे, then we will take this and we will simply, what we are doing is we are adding that into csum. Okay, that means we are adding 1 plus 4, that will result in 5 and 7 and 9. Okay, so this is fine, and at the end, like after the second loop, we are appending that column sum into our column sums list. This code is clear to you all? What it is doing? It is going column wise. Now if we see the next, how this is working, is this going column wise or row wise? This particular, yes, this is going row wise, so ये row wise work कर रहा है, ठीक है? So we can't have this. And similarly अगर आप ये देखोगे list comprehension, ये भी row wise जा रहा है, ठीक है? Because it is having just directly the sum of each. Just that इन्होंने name लिख दिया column, but if we directly iterate through the matrix, we will iterate via rows. Okay, because that is a 2D list. So yes, but that's why this is not true. But if we see the first one, the first one we are accessing the, like, the number of rows and number of columns, then हम वही सेम चीज कर रहे हैं. So इसको if I like explain it, so if I explain it, so see, मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा था, चेक द फर्स्ट लूप. ओके, तो फर्स्ट लूप राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी, ओके, यहाँ तो ऑल राइट, एक और लिस्ट, yeah, एक और list we are having. So this is a entire list. Okay, if you see here, we are calling some function on a list. This is a list here, this particular part. So this is a element, we can ignore this. The first loop is this one here. Okay, so सबसे पहले हम ये loop लिखेंगे. Then उसके बाद what it is doing is, it is going through like, जैसे मैंने यहाँ पे loop लिख लिया, for j in range n. Okay, then it is, what it is doing is, it is going for each and every row. Here let's check for the second loop now. And ये second loop जो है एक element के लिए काम कर रहा है, हर एक element के लिए it is working, and like हर एक element for the column sum. And उसके बाद it is like ये loop यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, and then we are just accessing the elements and summing them up. Okay, then बस sum कर रहे हैं, and j हमारा पहले से बाहर define था, i हमारा यहाँ पे define हो रहा है. So this is same as this code जो यहाँ पे है, both are same. Like if I write it also, so this is something like for j in range n. Okay, सबसे पहले outer loop. Then what it is doing is, it is simply like, if I create a column sum list, it is simply appending the sum. So what it is doing, okay, मैंने range गलत लिख दिया. What it is doing is, okay, column, it is taking a whole column here, that is this one list for I in range m.
and if I simply write elements, so for I in range m, element dot append m of I of j. Okay, ये 3 lines है ना, these 3 lines are representing this list. Okay, this list is these 3 lines, and then at the end what we will do, we will simply like sum this element, and we will simply append that sum element in column sum. Okay, so is this clear to you all? All right. Now let's move on to the next one. So here we have the calculate. So this is again recursion. We have to return the output. Now ये आप लोग मुझे बताओ, what is the base case here? If n equals to m, it will return m. Okay, let's check for the first one. Okay, is our n 1? n हमारा 1 है? No, this is m, this is n. So what it is doing, first condition तो false होगी, then it is returning, what it is returning? It is returning 3 plus calculate m minus m. So I'll write something like this. Okay, c 3 comma n minus 1, which is 1. Now tell me, is the n1, अब इस फंक्शन कॉल में बताओ, is the n1? Yes, Yes. n is 1, so it is returning directly 3. That means इसका हमारा आउटपुट क्या होगा, 3 and 3, which is 6. Now for this, n is not 1, so 4, and then it will call c4 comma 2. So here n is not 1, then it will what it will return, it will return m again. So that means यहाँ पे 4 return होगा plus c of 4 comma 1, and this will return 4. And what will be the output for this? 4 plus 4 plus 4, which is simply 12. 12. Yes, we are simply multiplying m, yes, n times. Of course, that is what we are doing, but the main thing is we have to decode what this code is doing. Okay, and now this 5 4, so ये वही है, सबसे पहले it will have 5, then it will again have 5, it will simply have m n times. Okay, so if you see 4 मेरा 3 times था, 1 2 3, 3 मेरा 2 times था, 1 2, and 5 मेरा 4 times था, and for the 5 it will have 20, and at the end we're just adding them up at 20 12 and 6, so that will be, 38. yes, 38. So that is the answer, 38. Is it clear to you all? Yes. Okay, now we have one interesting question. अभी तक का like paper, how is it, like is it easy, is it difficult, or what? Moderate. Moderate. Okay, let's consider it as easy because some are finding it very easy and all. So on an average, let's consider it as easy. Okay, now this is the list, n is having the length, and then we are having two flags, true and true. Then for I in range 1 comma end, I पे हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी? Okay, what does n store? What will n store? 7. And what will I store? 1 2 3 4 5 6. That means I will only consider, I will only have these particular sorry, not this, these particular elements, right? Am I right? Is it Yes. clear? Okay, now what it is doing is it is checking if L of I is greater than L of I minus 1. Okay, मतलब I मेरा start होगा let's say यहाँ से, so if I is this, is it greater than L of I minus 1? It will take till last element of the list, not last element, 1 comma n है ना,
So n is 7. Okay, sorry. Yes, the last index wise, of course, last. Wait, 0, 1, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So no, it won't take last element, it will take only second last. Okay, 6 है. Yes, 1 comma 6 है. N plus 1 नहीं है, n है. Now flag 2 equals false. Okay, so now tell me, if I is this 252 L of I, then is this condition true? Okay, is this condition true? Like, is this element greater than the previous element? No. So flag 2 will remain true. Okay, यहाँ पे flag 2 की like जो if I write flag 2 will remain flag 2 will remain true. Okay, then it is checking if L of I is less than I minus 1. That means, is it lesser than the previous element? Yes. So F1 will be false. Then for this it will check, is it greater? Okay, it is smaller. So then again it will have the same value, like F1 as false and F2 as true. Why? क्योंकि Sir, it will have same for till 22, na? Yes, till 22 it will have same, because सारे elements decreasing order में है. Okay. Yes. And at the end, like, it will go only till n. अगर ये n तक भी जाती तब भी also we will have the same element, right? Now, okay, it will be same. So now tell me, after running this loop, what will be the value of flag 1 and flag 2? Yes, Preeti, you can just So it clear. will take I value goes up till 6, right? So the index Yes. value of the last element is 6. So it will go up till 6, right? No. Okay, मैंने यहाँ गलत लिख दिया. I will go till 6. 1 comma, sorry. Okay, 1 comma 7 है, range 1 comma 7 है. That means it will generate 1 comma 2, 3, 4, 5, 6 and 1. Sorry, this is the 0th element, this is first, this is second, this is third, fourth, fifth. Okay. Sorry, confusion हो गई. Yes, sorry guys, confusion हो गई. Okay, yes, it will have this last element as well. And okay, ठीक है, even if it has last element, so last element के लिए भी same वही होगा, false and true. So now tell me, like, what will be the value of F1 and F2? Both will be false, na? Okay, both will be false. No, sorry, true. Both will be true. F2 is false. Yes, F2 will. Okay, F2 is false. Are you sure? F1 is false and F2 is true. Right. F1 is false, F2 is true. Okay. And now just they have to directly check. So it will simply return 2. Am I right? See, यहाँ पे देखो, this list is in decreasing order. It is checking अगर जो हमारा current element है वो previous element से, अगर current element previous element से बड़ा है, then F2 will be false. ऐसा तो नहीं है, previous element सारे बड़े हैं. So that means flag 1 is false. So flag 1 will always remain false for all the elements and flag 2 will always remain true. So answer is 2. Okay. Now this one. अभी ये आप लोग like मुझे फटाफट बताओ. What the function 1 is doing? It is matching the length, right? इसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. Am I right? The output of function 1. Then the function 2. What it is doing? It is doing the dot product, if you know. Like it is going through the range of all the elements in the list P and Q, and it is simply multiplying them and summing them up. Okay, it is calculating dot product. It is checking the length, it is calculating dot product, and the third, P comma Q equal 0. Okay, F2 of P comma Q. Okay, so it is checking whether that dot product is 0 or not. Okay,
So we have this collection here, and yeah, dot product is the sum. So then it will simply like check for these, go for the code. अगर हम code wise देखें, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट के लिए वर्क करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए वर्क करेगा, बस ये 3 एलिमेंट्स के लिए वर्क करेगा, राइट। एंड इसके साथ इसका वर्क करेगा, एंड इसके साथ इसका वर्क करेगा। सो सबका अपना अपना वर्क करेगा, एंड इट विल हैव लाइक काउंट प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू 1। सो इट विल सिंपली चेक कौन से लाइक बेसिकली कौन से लिस्ट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ओके, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, दैट मीन्स we will increase the count. ये तो you guys can calculate directly. Sir, can you tell how it will work? Dot product. Okay, how dot product, this function 2. Yes. So this function 2, if I like copy it, let's first write it in comprehension manner. So if you see here, we have a list comprehension. This is the list, and we have this first loop here. Let's write it. Okay. For I in range len of p. Okay, now what it is doing, it is multiplying them. Okay, mul equals p of I into q of I. Okay, this part, and then it is like simply summing each multiplication. So what we can have is, we can have an s equals 0 and s plus equals mul, and at the end it is simply returning s. Okay, so this is the code for this function 2 in normal list way, loop way. And how it is working, so let's say we have a list called p, and we have a list of q called 0 1 2. It will go for each index, it will multiply each respective index. Okay, so okay, it will first multiply 1 into 0, which will eventually result in 0. Then it will multiply 2 into 1, which will result in 2. Then it will multiply 3 into 2, which will result in 6. And then at the end it is just summing them up. Okay, multiply करके it is summing. So answer is 8. We have to check कि कौन सी list के लिए it will return 0. Can you see here, like f of 2, हम function 2 कॉल कर रहे हैं, and we are checking it with 0. जिसके लिए it will give 0 ना, we will simply like count them. एंड आपके पास लिस्ट है, ये सारी लिस्ट हैं, आप इन सब पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो. इज इट क्लियर? आई डिडंट गेट द लाइन 8. लाइन 8 इज सिंपली चेकिंग कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 0 है या नहीं. अगर 0 है इट विल रिटर्न ट्रू, अगर 0 नहीं है इट विल रिटर्न फॉल्स. दिस इज नॉट हार्ड. आप लाइक फंक्शंस बहुत सारे आपने देख लिए यहाँ पे, मतलब 3 फंक्शंस आर टुगेदर, सो दैट्स व्हाई हार्ड लग रहा है. इट इज़ इजी, एक एक करके चेक करो. दिस इज चेकिंग द लेंथ. सी मेनली डॉट प्रोडक्ट हम सेम लेंथ वाले लिस्ट का ही लेते हैं. अभी मैं लिस्ट ले रहा हूँ, और एरे वेक्टर कह लो वैसे तो, बट लिस्ट डायरेक्टली. सो सेम लेंथ वाली लिस्ट का ही हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं. एंड देन वी आर जस्ट चेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, एंड इन द थर्ड फंक्शन वी आर चेकिंग कि उनका डॉट प्रोडक्ट सेम है या नहीं. यस, फर्स्ट 3 लिस्ट का लाइक फर्स्ट 3 लिस्ट का एक दूसरे के साथ होगा, फोर्थ लिस्ट का उसी के साथ होगा, फिफ्थ लिस्ट का उसी के साथ होगा. ओके, yes, for the first iteration p and q will be same. Okay. I actually have a doubt. Yes. I don't understand the role of P and Q exactly in this code. Okay, this p and q is a list, like we are going for each collection, that means for each list, and again for each list we are passing the list in function 1 and then in function 3, and inside that function 3 it is being passed to function 2. Yeah, those functions I understood. So if P is like equal to 1 0 minus 1, like in the collection list of lists, you are taking the first one. So then then will the Q be like 0 1 0? No. I mean the next one, or will it be the same? The Q will be same. Okay. Okay. सबसे पहले for the
P will be P will be this first element, this first list, and इस first list को it will check with all the rest of the list for Q. Okay, सबसे पहले P की वैल्यू होगी 1, 0, -1, देन Q की वैल्यू ये सेकेंड लिस्ट होगी, देन Q की वैल्यू थर्ड लिस्ट होगी, देन फोर्थ लिस्ट, देन फिफ्थ लिस्ट, फिर P की वैल्यू होगी सेकेंड लिस्ट, and then Q की वैल्यू सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, and similarly again. Okay, it is checking for all the combinations mainly. आप ऐसे देख सकते हो. All right. Now string.txt. This is the string.txt. We have 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6e, 6f, 7g. So here we are having what is the output of the following code. Let me just directly take the screenshot. Okay, yeah, here it comes. So now what is happening? We are having a count here. We are reading the file for line in F. Okay, हर एक line पे जा रहे हैं. If we directly iterate through the F now, it means we are simply like doing F dot read lines. Okay, for line in F or for line in F dot read lines, both are same. Okay, first of all इससे clear हो जाना. Then line dot strip. Line dot strip means we will like line पे जो है सबसे पहले कुछ ऐसा आएगा 1a \n. ये \n को हटा रहा है strip करके. So it will give us 1a. Then it is checking for character in line. Try x equals int of character. That means ये इस character को integer में convert करेगा हर एक को, 1 को भी और a को भी. 1 तो हो जाएगा, अगर 1 हुआ ठीक है, a नहीं होगा then it will take the value error. Okay, and it will simply add 1 in count. So 1 इसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, here also, and the total will be 7. Okay, is this clear to you all? All right, output is 7. That is fine. Now we have this interesting question. Okay, किसको क्लियर नहीं है? Okay, see, फॉर करेक्टर इन लाइन एक एक करेक्टर के लिए जा रहा है. डैट मीन्स अगर हमारी लाइन है 1a, सो ये पहले 1 के लिए जा रहा है, फिर a के लिए जा रहा है. ओके, फॉर 1 इट इज चेकिंग कैन वी कन्वर्ट दैट 1 इनटू इंटीजर. यस, वी कैन कन्वर्ट. देन इट इज चेकिंग फॉर a, कैन वी कन्वर्ट a इनटू इंटीजर? नो, वी कैन नॉट. सो एरर रेज हो जाएगा, वैल्यू एरर. एंड इस वैल्यू एरर में क्या हो रहा है? सिंपली काउंट इज बीइंग इंक्रीमेंटेड. तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर 1a. देन 2b के लिए, देन 3c. आस्काई वैल्यूज नहीं है, आस्काई वैल्यूज नहीं है. इट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इट. ओके, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इट. लाइन इज अ स्ट्रिंग. सो यहाँ पे इफ यू सी इन ऑल द लाइन्स वी हैव फर्स्ट करेक्टर एज अ इंटीजर, सेकेंड करेक्टर एज अ स्ट्रिंग. सो हर लाइन पे सेकेंड करेक्टर के लिए इट विल रिटर्न, इट विल थ्रो एन एरर, वैल्यू एरर, एंड वहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा. सो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, एट द एंड 7, एंड 7 विल बी प्रिंटेड. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ लेट्स हैव दिस. So we have to print what is the output. Okay, so what is the output for this? So words are these 5, 1, 3, 4. Okay, word is an empty string as of now. Value and index both are 0, while index is less than len of words. So isn't okay, while index is less than len of words. Len of words क्या है? What is the value of len of words? Okay, yeah, len of words is 4. Are you sure? 5? No, this is a string, right? So no, it is not 4. 1 भी नहीं, it is a string. 23.
Yeah, okay, yes, 23 or 22, something around that. I'm not calculating it exactly. Okay, why you guys are getting confused? ये string है, it is not any list or tuple or dictionary set, कुछ भी नहीं है, it is a string. string में हर एक character count होगा. So 23, जब तक index 23 से कम है, it will take that. Excuse me, I am not getting it. Okay, words is a string, right? This string Yes. is just quoted in a single quote. So doesn't matter उसमें comma है, colon है या space है, that will also be considered as a character. Okay, that means the length is 1. We have to just simply count how many elements are there in this list. 1 2 3 4 Okay, 5 just 6 you are taking 7 the 8. length. Yes. Got it. Okay. Then we are just accessing that particular character, and character access करने के बाद we are increasing the index. If character is this, तो ये character कहाँ पे आ रहा है? इस particular part पे आ रहा है, right? Then loop break हो जाएगा. मतलब हमारा जो loop है वो सिर्फ यहाँ तक चलेगा, 5, 1, 3 तक, है ना? Is it clear? हमारा loop सिर्फ Yes. यहीं तक चलेगा. And then it will check if character is a comma. That means जैसे ही हमारे पास comma आएगा, what it will do is it will do value plus equals d of word. Okay, what word do we have here? Word is a, okay, all right. Okay, so इस पे जाने से पहले बिफोर दैट लेट्स सी दिस. सो हमारे पास हर एक कैरेक्टर ऐड हो रहा है. तो सबसे पहले तो वर्ड पे एक बारी जब तक कॉमा नहीं आएगा ना तब तक 5 ऐड हो जाएगा. जैसे ही कॉमा आएगा दिस कंडीशन विल बी ट्रू एंड इट विल सिंपली एक्सेस द वैल्यू ऑफ दैट वर्ड. सो 5 का 5 वैल्यू ये है, इसके 5 की ये है एंड इसकी वैल्यू है 5, तो वैल्यू के अंदर आ जाएगा 5. देन वर्ड अगेन से एम्प्टी हो जाएगा, फिर इट विल कंटिन्यू and it will check for 1 and 3. So output हो जाएगा 5, 1 and 3 which will be 9. Okay, it is simply going till 5, 1, 3 and हर एक word को ये ले रहा है, उस word की value dictionary से access कर रहा है. तो उस word की value specific वही है, so 5, 1 and 3 की, and hence we are getting 9. Is it clear? Means it's returning the sum from the string. Sum from the string until we get this. That Yeah, is here. till we get the slash. Yes. So output is 9. Okay. Now we have a doctor class, init function, name and fee, self.name, self.fee. So self.name and self.fee are instance variables or attributes. Okay. Print info. We are printing the information doctor name Sir, and how doctor 9 fee. is came? How 9? 5 plus 1 plus 3, like 3 words we have here, right? एक 5 है, एक 1 है and एक 3 है. उसके बाद exclamation mark है तो रुक, sorry, we have slash, so it will stop here. Yes. Okay. We are also getting comma after for, but नहीं ना, जब जैसे कैरेक्टर ये आ जाएगा loop will break. Okay, so loop ही खत्म हो जाएगा. They can go to again while loop. No, loop जैसे break हो गया it will directly go outside. Okay. Okay. Yes. And then okay, we have here doctor name, doctor fee, then change fee. So change fee is just accessing new fee and just setting that to the whatever fee we have. Surgeon is a subclass of doctor. अब ये जिसको inheritance पता है उसको clear होगा. We are having name, we are passing name and fee to the previous one, that is fine. Surgeon count 1 हो रहा है, increment हो रहा है, like जितने भी हम surgeon बनाएंगे ना instance, तो हमारे पास एक count store होता रहेगा. Okay, then the print info, we are calling the print info, surgeon is a doctor with the experience. Okay, is experienced if experience equals yes. All right, tell me the output for this one, print info. Like एक तो सबसे पहले आएगा surgeon, सबसे पहले आएगा doctor name is Kian and then doctor fee
is okay. Doctor fee क्या आएगी, 1000 या 1200? 1200. Yes, doctor fee is It will be 1200. 1200. Yes, and then it will return experience. Surgeon is a doctor and experience as yes. Okay, तो 4 lines का output आएगा. This is not possible, this is possible क्योंकि यहाँ पे 1000 है, 1200 should be there. So this is correct. ये तो basic है if you know the OOPS. Okay, OOP, object oriented programming. Then this short answer question, hospital represent a list of surgeons. Okay, अब हमारे पास list of surgeons आ गए हैं. Now for surgeon in hospital, if the surgeon is experienced, then count will be 1. Tell me the value of count. हमें just yes or no check करना है. 3 times yes है, we'll have 3. Okay. Then we have this CSV file, employee.csv. We are reading via file. Okay, what we are doing here, we are reading via file. सबसे पहले हम header read करके उसको ignore कर रहे हैं. Then we are having a dictionary employees. तो okay, if I like, I should run this. So आपको clear हो जाएगा कि हो क्या रहा है हमारे पास. ऑल राइट, तो सबसे पहले हमने फाइल रीड करी, रीड द हेडर, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया. एम आई राइट? वी हैव लाइक व्हेन वी हैव डन we are doing f dot read line, we are just ignoring the first line, and then we are having for line in f, like we are starting from line number 2, we are splitting each and every character. That means HR अलग हो रहा है, John Doe अलग हो रहा है, and John Doe and then manager. That means we are having a list of something like this, HR and John Doe and manager. I'm just writing in a very short manner. So हमारे पास line ऐसे है, and we are accessing the department name and position. If department is not in employees, so employees is a dictionary. अगर department नहीं है as a key, okay, then what it will do is it will create a dictionary for that. Okay, so that means we will have employees dictionary. जो employees dictionary है, it is something like this. It is a dictionary where each department is a key, like HR, IT and sales. These departments we have, right? Yes, it will be like I'll upload this session in my YouTube channel. This Parampreet Singh, you can subscribe to it. Okay, after the session, and you will like after 1 hour you will get the recording. All right, so इसमें क्या हो रहा है, like what we are doing here is, अगर डिपार्टमेंट नहीं है एम्प्लॉयज में, स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉयज लिस्ट एम्प्लॉय डिक्शनरी एम्प्टी है, तो ये क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो डाल रहा है की में, एंड इट इज हैविंग अ डिक्शनरी हियर. ओके, यहाँ पे डिक्शनरी आ रही है. सिमिलरली यहाँ भी एंड यहाँ भी एम्प्टी डिक्शनरी तीनों के लिए. लाइक वी कैन assume as of now. Then if name not in employee of department. Okay, so what it is doing is, if I like, I'm able to select it. Okay, yeah, so employee dictionary आ रही है, and then what it is storing is if name not in employee department, मतलब हर एक डिपार्टमेंट पे जाके इट इज चेकिंग कि इसकी जो डिक्शनरी है, दिस डिक्शनरी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट से वी आर एक्सेसिंग दिस डिक्शनरी, एंड इट इज चेकिंग अगर वो नेम है या नहीं डिक्शनरी में. अगर नेम नहीं है, इट इज हैविंग दैट नेम एंड इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन एज द वैल्यू. दैट मीन्स हमारी जो एम्प्लॉयज डिक्शनरी बनेगी ना, दैट विल बी समथिंग लाइक, if I write here, that will be something like this, John Doe John Doe manager, and for the HR, Jane Smith HR coordinator, Jane Smith colon HR coordinator, and ऐसे से करके हमारा IT का भी बनेगा, मतलब name and their position. Okay, and then again name and position for each department.
So we are just simply grouping by the department. Is it clear कि हमारे पास data किस way में है? Yes, sir. Means it's creating a dictionary based on department, no? Yes, based on department. And Okay, then we got it. have to simply check employee of finance. Do we have any finance department here? No. Right, we only have 3 departments. It will simply return key error. It won't return file not found error, key error आएगा. So हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा key error. Okay, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. Then len of employees HR dot keys. Okay, तो हमें देखना है कितने HR वाले एम्प्लॉयज हैं. Okay, so HR1, HR2, HR3. There are 3. 3, right? So 3 will be the output. So 3 is the output. Okay, we are done with one question. And yes, हमने almost 1.5 hour में किया. 1.5 hour हमें मिलेंगे. 1.5 hour में we have done with the PYQ. अभी तो like हमने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल वे में किया है, राइट? आई होप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. इफ नॉट सारे, एक दो में जिसमें डाउट होगा, यू गाइस कैन लाइक गो थ्रू इट अगेन, आपको सारा क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स डू वन मोर. ओके, दोज टू क्वेश्चंस, एक तो मे बी मैट्रिक्स वाला होगा आपके लिए, या तो फिर जो पहले काउंट वाला था. डोंट वरी. हाउ लॉन्ग द सेशन विल बी. अभी वी विल डू दिस PYQ, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? ओके, टेल मी व्हाट फंक्शन 1 इज डूइंग. इट इज ओके. Number of digits. Sorry, Fn is taking number of digits. नंबर ऑफ डिजिट्स. हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट. तो ये जो है नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है. अब ओके, ऑल द PYQs you can get in sgrade.in/PYQ. ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो. एंड दिस इज फॉर द Sir, but Jan paper is not there. yes, I'm adding that as well. Okay, now it is having number of digits. Okay, so ये एक एक को मतलब डिवाइड कर रहा है by 10 and we are having a number of digits. अगर हम जैसे 100 पास करेंगे तो थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? अभी let's try to solve it in at least half an hour, at most half an hour. Okay, let's say हमारे पास एक नंबर है 235. Okay, first let's pass into the Fn. Is n less than 10? No. तो क्या हो रहा है? 1 plus, okay, let me write it. Okay, now this is fine. Let's have 237. Okay, so 237, n is not less than 10. Okay, Fn में हम पास करके देखते हैं. n is not less than 10, so यहाँ पे जो है 1 plus क्या होगा? n divided by 10, so that means 23 आएगा, not 230, 23. so f of 23, and यहाँ पे भी लेस देन नहीं है, so that means इसकी जगह क्या आएगा? 1 plus then f of 3. now this is less than 1, so यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. okay, तो 1 plus 1 it will return 3. so we are like cleared कि it is number of digits. these are number of digits, right? now this code, what it is doing, अगर सिंगल नंबर नहीं आ जाता, काइंड ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ डिजिट, राइट? जब तक हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं आ जाते. एंड देन here what we are doing, okay, 237 से लेते हैं, so it will simply divide to it will do the mod 237 mod 10, and that will simply returns us the last number, this particular 7. okay, हमारे पास 7 आएगा. 7 plus g of 23, and g of 23 पे अगर हम करेंगे, that means 23 mod 10, it will return 3. and then again यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी when we pass g of 2, so इसका हमारे पास आ जाएगा 2. so what it is doing is it is sum of digits, right? 2 plus 3 plus 7, which is 12.
दोनों फंक्शंस क्लियर है सबको? ओके, बाकी सबको क्लियर है? ओके, आज का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन क्लियर नहीं है? सर यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट वाला जो कोड है दैट इज सिंपली चेकिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, हर एक एक डिजिट पे इट इज जस्ट एडिंग 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स ये चेक कर रहा है, ये सम ऑफ डिजिट्स कर रहा है। ओके, दिस इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, this is calculating sum of digits. Okay, then third is simply factorial. If you all know, like हम चेक करें नंबर लेस देन 1 है या नहीं, अगर नहीं है then we are multiplying that number with the other. Yes, other. Okay, see, return n into h of n minus 1. सबसे पहले हम 2 3 7 पास करेंगे. So what n here is? All right, this is okay. If n is less than equal to 1, it will simply return n. This is not It is checking for factorial. okay, not exactly factorial, I would say. It is simply 237, right? 237 Yes. into h of 23. Sorry, not okay, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया. Let's consider a very small number for this. Let's consider, yes, factorial ही ले रहा है, but मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया था. Let's check only for 3. Okay, 3 के लिए ले लेते हैं, that is fine. So 3 into h of 2, and h of 2 will give us 2 into h of 1. h of 1 will give us 1. So 3 into 2 into 1, which will be 6. मैंने पहले बहुत बड़ा नंबर ले लिया था, मुझे आइडिया ही नहीं था. ऑलराइट, so yes, this is number of digits, this is sum of digits, and this is factorial. Okay, let me remove this. Let's go here. So which of the following function call returns the sum of digit of 100 factorial? Okay, 100 factorial का हमें sum of digits देना है. So that means हमें सबसे पहले factorial like calculate करना पड़ेगा, then हमें उसका sum करना पड़ेगा. So sum of digits means सबसे पहले h function call होगा, जो भी उसका output आएगा उसके ऊपर g function call होगा. So that means g of h of 100. Okay, is it clear? All right. Now next one. So yes, what they are asking here, if n is a non-empty list of positive integers. Okay, let's take a non-empty list of positive integers. That is fine, 4 तक ले लेते हैं. Okay, let's first check the first condition. Is it true? No, it is not true. Then let's check for this. Is the 0th element an even? 0th element even है? This is also false. No, it is what, then what we are doing is simply we are checking the calling the function on the rest of the list. That means 2 3 4. Up 2 3 4, this is false, this is true. जो first element है that is even. Okay, then it is incrementing 1. Yes, count of evens है. So 1 plus f of 3 4. अब 3 के लिए this will be false, 3 4 के लिए this will also be false, क्योंकि 3 जो है even number है, it is sorry 3 odd number है, it is checking for even number. Then it will go to else. So यहाँ पे क्या होगा, else पे function call हो जाएगी with the 4. Okay, 4 जैसे पास किया it is again false, this will be true, and true होते ही what it will do is it will simply gives us 1 plus f of empty list, है ना. 1 के बाद हम जाएंगे तो empty list आएगी and that will simply return 0. So that means इसका output होगा 0.
and total output will be 1 plus 1 plus 0, which is 2. That is the sum of even digits. Is it clear to you all? Number of even digits we have, not sum, sorry, number of even digits we have. And if we see here, it returns a total number of even elements. Digits or elements, both are fine. So okay, write file. सो राइट टू फाइल. तो हमारे पास एक लिस्ट है जोन कॉमा 90 जेन कॉमा 85, मतलब हमारे पास नेम है एंड मार्क्स है. वट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ स्कोर्स डॉट CSV फाइल राइट मोड. सबसे पहले हमने हेडर डाल दिया, लाइक एक लाइन डाल दी नेम कॉमा पाइथन, ओके, विच बेसिकली रिप्रेजेंट द कॉलम नेम्स, ओके, लाइन नंबर 3 पे. देन इन लाइन नंबर 4 वट वी आर डूइंग इज वी आर आइटरेटिंग थ्रू द लिस्ट एल. हम लिस्ट एल पे जा रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट से नेम और मार्क्स एक्सट्रैक्ट करें. डैट मीन्स नेम में जॉन स्टोर होगा, मार्क्स में 90, नेम में जेन, मार्क्स में 85, हर एक आइटरेशन पे. इतना क्लियर है सबको लाइन नंबर 5 तक? ओके. देन लाइन नंबर 6 इट विल सिंपली क्रिएट अ एफ स्ट्रिंग, नेम कॉमा मार्क्स करके एफ स्ट्रिंग बना लेगा, ओके, which is of the CSV manner. Then it will check if I is not equal to len of L minus 1, okay. मतलब जब तक जो है I सबसे लास्ट एलिमेंट नहीं आता, जब तक लास्ट एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि I की वैल्यू len ऑफ L माइनस 1 तभी होगी जब हमारे पास लास्ट एलिमेंट आएगा, डेट इज डेविड कॉमा 95. उससे पहले जितने भी आ रही है ना लाइन्स हमारी बन रही है उसमें हम बैकस्लैश एन डाल रहे हैं एंड वी आर जस्ट राइटिंग that particular line into our file, and at the end we are just closing it. That means we are creating a CSV file. Is it clear? हम CSV फाइल बना रहे हैं नेम और मार्क्स की. ये सबको It will create a some sort of table, no? Not table, a CSV file. Okay. Okay. CSV file and just हमें बस show करने कि how it will be. So this is how it will look like. Okay, ऐसे ही होते एक नॉर्मल CSV फाइल. That is it. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. If you know like about file handling basics, that is fine. बस उतने से ही आपको क्लियर हो जाएगा. Then we have this question. What will be the output? Okay. String 1, string 2. L is empty list for I in range L of string 1. ये पूरे string पे जा रहा है, ये भी पूरे string पे जा रहा है. अगर string 1 मैच कर रही है, L dot append this L dot append string 1 and it will simply break. Okay. So now tell me, L में हमारी लिस्ट क्या बनेगी पूरी? Let's check for this. सबसे पहले W आएगा. W will check with all these. कोई भी मैच नहीं कर रहा. ओके, इट विल सिंपली कंटिन्यू. ई के साथ चेक होगा, ई यहाँ पे आ रहा है तो एल पे एक ई आ जाएगा, ओके. बाकी के लिए इट विल डायरेक्टली कंटिन्यू. एल हमारा आ रहा है, एल जैसे ही हमारा एक बार ही आया ना इट विल जस्ट ब्रेक द लूप, ओके. तो मतलब हमारा यूनिक एक ही बार ही आएगा. एंड देन सी नहीं है, ओ है, ओ हमारा यहाँ पे है, ओ आ गया. एम पे अगर भी चेक, एम भी नहीं है. देन ई पे अगेन इट विल चेक, सो यहाँ पे ELOE आ जाएगा. सो डैट मीन्स L is having all the elements of string 1 which are present in string 2. Okay, is it clear? Is it clear to everybody? All right. Yes. So ELOE. Okay. Then min max. What this min max is doing? If A is less than equals to B, it will return A comma B. Okay, small सबसे पहले return करेगा, then the minimum it will return at first, then maximum. अगर this condition is not satisfying, if it is not true, then it will return the opposite, B comma. So when min max x comma x is called, अगर हम सेम नंबर पास करेंगे A and B पे, then कौन सी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? लाइक सिंपली वी कैन सी लाइन नंबर 3, बिकॉज A is less than equal to B है.
ओके अगर a इज लेस देन होता देन 4 लाइन एग्जीक्यूट होती. ओके बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये तो. नाउ दिस वन, ये तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा. सी की वैल्यू पेयर है. ओके हम क्या कर रहे हैं, फॉर की इन डी हम एक एक वैल्यू बना रहे हैं. ओके हम वैल्यू ले रहे हैं उस पर्टिकुलर की. ठीक है यहाँ तक तो सही है, ये तो वर्क कर जाएगा. नाउ इट विल चेक इफ टाइप ऑफ वैल्यू इज स्ट्रिंग, तो इट विल रेज एरर. तो क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ फर्स्ट वाले की वैल्यू पेयर पे स्ट्रिंग है ये वैल्यू, नो इट इज इंटीजर. देन दिस इज ऑल्सो इंटीजर 43, दिस इज स्ट्रिंग. ओके जैसे स्ट्रिंग आएगी ना तो यहाँ पे कैन यू गाइस सी रेज एरर. रेज एरर सिंपली बेसिकली रेज इज अ कीवर्ड विच वी कैन यूज टू बेसिकली रेज एन एरर. दैट मीन्स हम एक एरर खुद से मतलब खुद से एक एरर हम रेज कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा कोई कंडीशन आई, अगर कोई ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम एक एरर थ्रो कर देंगे. ओके सो इट इज़ बेसिकली थ्रोइंग एन एरर. तो यहाँ पे एरर आ जाएगा एंड बस वी आर जस्ट रेजिंग दैट एरर. अगर जब तक वो एरर नहीं आ रहा इट इज़ जस्ट प्रिंटिंग की कॉलन वैल्यू. और जैसे ही वो एरर आएगा what it will do is it will stop there, and after stopping it will simply print value cannot be strings. Is the code clear to you all? No, try is exceptional handling, it will check for error. Like for the clarity you can watch my last session, I have like cleared exceptional handling there. Okay so हमारे पास एक तो फर्स्ट की वैल्यू पेयर आ जाएगा, सेकंड की वैल्यू पेयर आ जाएगा आउटपुट में प्रिंट पे, एंड हमारे पास आएगा वैल्यू कैन नॉट बी स्ट्रिंग. सो हमारे पास 3 लाइंस का आउटपुट आएगा. दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज हाफ करेक्ट, दिस इज ऑल्सो हाफ करेक्ट, एंड दिस इज द फुल्ली करेक्ट. ओके इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बाकी तो हमें आउटपुट मैच करना है. ओके आज का इफ़ यू डोंट नो एक्सेप्शनल हैंडलिंग देन लाइक आपको क्लियर नहीं होगा. इट इज़ बेसिकली हैंडलिंग द एरर हेयर. आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग का एक बारी लाइक यू कैन वॉच माई प्रीवियस सेशन, देयर आई हैव कवर्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, आपको क्लियर हो जाएगा देन. सो यस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ब्लॉक प्रिंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स? ओके प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स प्लीज चेक. ओके इन्होंने खुद ही बहुत बड़ा हिंट दिया है. सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एन मोड 10 से, लास्ट डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है एंड हेयर इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड, हेयर इट इज़ बीइंग एडेड. सो ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है, ये सम ऑफ डिजिट्स है. ओके यू कैन गो थ्रू द कोड, आपको क्लियर हो जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द ओके दिस इज ओके बट दिस इज डूइंग इज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट, ये उल्टा कर रहा है. ओके that means like if we have a number let's say 235, it is multiplying 23 by 1 at first and 5 को वो ले रहा है, so 23 into 5 कर रहा है. that is what we that is what we don't need. We need 5 into 3 into 2 or in the opposite manner. so ये code this is wrong. okay you can just like check कि what will be the output of n mod 10 and n divided by 10. आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो n, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 235, ये सारे कोड को ना रन करो, ऑल 4-5 स्निपेट्स, इन सारे स्निपेट्स को रन करो इन द रफ शीट, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा. ओके इज इट क्लियर टू यू ऑल कि वाई दिस वन इज करेक्ट एंड वाई नॉट द रेस्ट? बहुत बेसिक था ये तो. सिमिलरली यहाँ पे भी सम हो रहा है एंड summing up the digits like in a very vague manner. So then this select all the code snippets that will run without any error. This will run, of course, this will also run. We are just printing the unpacking the tuple. Then this C is not defined here. Okay, so this will run this will throw an error. Now here D we can like we have 3 elements but we are creating 4 variables out of these 3 elements. That is also not possible, so it will also return an error. बहुत basic question था. Is it clear? Yes. Okay, now next one.
Okay, this is interesting. Some word is a string that has already been defined. The above code runs without any errors. The output of the given code is true. Okay, सो ट्रू दे रहा है. सो सबसे पहले ट्रू कहाँ देगा? अगर वो अल्फाबेट्स है, मतलब पूरा जो वर्ड है दैट कंटेन्स ओनली अल्फाबेट्स. ओके, दिस विल गिव अस फर्स्ट ट्रू विच इज फ्रॉम लाइन नंबर 13. एम आई राइट? Like, okay, now check for the next one, this particular. Let's say मैं ले लेता हूँ अपना नेम ही ले लेता हूँ. ओके, लेट्स से जो मैंने यहाँ पे वर्ड पास किया that is param, and n what we are passing here, okay, 5, only 5 we are passing. That is kind of very restricted. Okay, we are passing 5. So it is creating an empty dictionary. P equals empty dictionary for C in word. If C not in P, P of C equals to 0 and P of C plus equals to 1. It is basically having the occurrence. So मेरी जो P dictionary है, it will be something like this. P की वैल्यू हो जाएगी 1, A की वैल्यू हो जाएगी 2, R की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1. Is this loop clear? Like line number 6 तो clear है सबको? It is just having the frequency. Then this for C in P. If C, okay, for C in P, if that is equals to n, that will return true. Okay, what it is doing is it is checking जो हमने नंबर पास किया है ना, क्या इस पूरे वर्ड में कोई एक ऐसा वर्ड है, कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम एज n है. तो अभी जैसे यहाँ पे 5 पास किया इन्होंने, तो इसके लिए तो इट इज़ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. मान लो मैं ये पास करता हूँ ए ए ए ए ए, it will return true. Am I right? Yes. If I pass in a a a, what it will return? True or false? False. False. Letter repeating for 5 times, at least one character. Okay, at least one character. अगर एक से ज़्यादा भी हुए, मान लो जैसे ये है B A B A A B A B C A. So 1 2 3, yeah. It will return true. Why true? एक like A is coming 1 2 3 4 5. Okay. So B की frequency हमारे पास इस पे P की डिक्शनरी बनेगी. B as 3, C as 1, A as 5 and B as 1. Okay. So it will return true only if the word is alphabet and it has some character which is occurring at least 5 times. Yes, at least one character which is occurring 5 times. Then some word is only made up of alphabets. That is correct. It could also contain numbers. Wrong. Len of some word is at least 5. Yes, लेन ऑफ वर्ड भी कम से कम 5 होनी चाहिए. अगर वर्ड ही हमारे पास 4 हैं देन अपने आप ट्रू फॉल्स आ जाएगा, राइट? अगर वर्ड्स 4 हैं तो उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर तो हो नहीं सकता जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी. एटलीस्ट वन लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट अकर्स एग्जैक्टली 5 टाइम्स. सो यस, एटलीस्ट वन लेटर, एग्जैक्टली नहीं है, एटलीस्ट है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. वी आर हैविंग a loop here. We are not having any kind of specific condition. Is this clear to you all? Okay. Abhi let's move on to the next one. We have here sequence, number, name, gender and all. Do something. Okay. ज़्यादा नहीं मैं मतलब देख रहा क्योंकि ये बहुत easy है. What it is doing, it is having a file name and a subject. हम एक एक लाइन पे जा रहे हैं. We are excluding the header. हम सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर एंड ऑल. हम हम जो है सीरियल नंबर, CT, पाइथन और PDS इन सारे मार्क्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. देन इट इज़ लाइक एडिंग, ओके, वैल्यू प्लस CT, वैल्यू प्लस पाइथन. ओके, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी हम पास कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स रिटर्न कर रहे हैं. नो, नॉट टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स.
Average. yes, because it is adding the count as well and value divided by count. So पाइथन के एवरेज मार्क्स आ जाएंगे बिकॉज code.csv में हमने पाइथन पास किया. बहुत बेसिक सा कोड है, अब एक बार गो थ्रू करोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? लाइक Yes. Yes, Alright. clear. नाउ नेक्स्ट वन, एक एल लिस्ट है, ये थोड़ा देख लेते हैं. इस पे स्लाइसिंग है. ओके, what will be the len of s? ओके, तो हमें s की लेंथ बतानी है. So this is what L we have here. While I is less than L. Okay, I अभी 0 है. Length इसकी 5 है. S equals. Okay. अब मुझे ये बताओ, I अभी मेरा 0 है, तो L of colon till I क्या होगा? Anyone? Empty list. Am I right? Yes. Then L of I till final. So it will be whole list, right? 1 2 3 4 5 and ये जो है S में आ रही है. So that means S plus this and उसके बाद for J in S T plus equals to J. Okay. तो पहले उन्होंने पूछा len of S क्या है, तो हम S में दोबारा से if we go for I equals to 1 then it will have like S पे हमारी थी पहले 1 2 3 4 5 I1 हो गया. So it will have this like sorry 1 plus 2 3 4 5 then वापस से हो जाएगा 1 2 3 4 5. Okay, it is basically we are replicating the list that many length times. That means जो S की लेंथ होगी ना that will be 25. Am I right? क्योंकि इसकी लेंथ 5 है, वी आर गोइंग फॉर ईच एंड इसकी 25 हो जाएगी. नाउ फॉर J इन S हम एक एक एलिमेंट में जा रहे हैं और उसका सम कर रहे हैं, मतलब हम ये सारी लिस्ट का सम करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. फॉर T, दिस इज फॉर T and 25 is the length of S. Okay, so 25 is the length of S and वो तो okay उन्होंने पूछा ही नहीं, that is fine. Log function, it is calculating the log 1 plus x mod x divided by y into y. तो ये तो बस log पास कर रहे हैं, तो सबको पता. This is September 20 I think. No, May 23. This is May 23. This is exactly previous one. So ये तीनों का log ले रहा है like 16 raised to the power 25, 256, 2 raised to the power 16, 3 raised to the power 20, sorry, not raised to the power. log ले रहा है. बेस हमारा 3, बेस हमारा y है एंड x हमारी वैल्यू है, तो जो भी हमारे पास पावर आएगी तीनों की पावर सम हो जाएगी. ओके, दैट विल रिजल्ट इन 9. सो ये तो बहुत बेसिक है. यहाँ पे इन्होंने नेम दिया तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. वेल यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, बट इज इट क्लियर लाइक व्हाट इट इज़ डूइंग? ये तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी डाल लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, तो देन assume the values of boolean variables a and b are true and false. Okay, a और b true and false है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. ओके, a is true, b is false. Tell me what this will result. This is true and false and इसके पूरे का आ जाएगा false, right? and not false है, not false तो आ जाएगा यहाँ पे true. Am I right? इतना क्लियर है सबको? This part. Now for this part, not a.
So not true, that means false, and false, तो इसका भी false आ जाएगा. So true comma false is the output here. True comma नहीं, sorry, true space false comma print statement में था. Okay, now A और B, A और not B, ये भी हो जाएगा easily. So we will do this. Move to the another question. Yes, this is also possible. ये सारे तो हो जाएंगे. Now this one, ये एक product हमने class बना ली. We have a title, we have a price, change price, हम price एक new डाल के change कर सकते हैं and उसके information print करें. It is similar to the medical one जो हमारे पास पहले था. Yeah, surgeon one. Yes, surgeon one. And then we have a book. Book में हमारे पास एक book एक product हो of course, and उसका author है, genre है, and book को count हम कर रहे हैं. And book is a fiction or not, we are checking with the function. And उसके बाद उसकी सारी details print कर रहे हैं. तो ये हमारी बुक क्या, वी ऑल नो क्या होगा आउटपुट. नेम हमारे पास ये आएगा, प्राइस हमारे पास 300 आएगा, एंड यहाँ पे डॉक्टर कलाम ऑथर आ जाएंगे, एंड प्रोडक्ट इज अ बुक, फिर ऑथर, फिर जॉनरा. तो हमारे पास टोटल 5 लाइन्स प्रिंट होंगी. 1 2 3 4 5. एम आई राइट? एंड यहाँ पे 250 आएगा. तो 5 लाइन वाला आउटपुट ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हमने किया था प्राइस. बहुत ईजी है ये तो. नाउ दिस वन, book, it is checking for the fiction. Answer, yeah, so it is asking what does this represent. So it will represent number of fiction books. Yes, ये तो सबको पता है ना. अगर यहाँ पे होता if not, so it means it is representing number of non fiction books. अगर यहाँ पे if not होता. So I hope ये तो clear होगा सबको. Yes sir. ओके, तो हमने ये भी कवर कर लिया, एंड काफ़ी जल्दी कवर कर लिया, हाफ एन आवर में. सो आवर स्पीड हैज़ इंक्रीज नाउ, राइट? ओके, एग्जैक्टली 30 मिनट्स, सो दैट इज़ ग्रेट. एक क्लास पेपर देख लेते हैं, ठीक है? दिस वन. सबको लाइक क्लियर तो हो रहा है ना सब कुछ? ऐसा कुछ डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा? No, no. ऑल राइट. Crystal clear. देन इट इज आस्किंग प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ये तो हमने यहाँ पे करा था, है ना, ऐसा क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स वाला. सो ये तो जस्ट वी हैव टू चेक. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये तो सम ऑफ डिजिट्स हो गए, ये प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स है. दिस इज करेक्ट. यहाँ पे अगेन ये वेग मैनर में हो रहा था, ये हमने अभी क्वेश्चन करा था लास्ट, एंड ये भी हमने करा था. ओके, May 23 I have opened ना, तो सेम आया क्या? Why it is having like same questions? Okay, ये थोड़ा different question है. So now let's go for this one. All right, so this is the question. A is a matrix of 3 by 3, B is a matrix of 3 by 3, है ना? N will have 3, and C is also matrix, it is an identity matrix. What C is having, you can see like हम जो है एक like row and column पे जाके what we are doing is we are accessing that specific element, and हम उसका जो difference है A minus B, that we are storing in C. Okay, and we are storing in C, and उसके बाद we are printing it also. How we are printing it? If j is not equal to 1, not equal to n minus 1, मतलब जब तक j जो है लास्ट एलिमेंट नहीं आता तब तक हम कॉमा डाल रहे हैं. दैट मीन्स जैसे यहाँ पे इसका सम आ गया, लाइक हमारा C, मैं फर्स्ट वाली लिस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सो 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 3 minus 4 minus 1, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? लाइन नंबर 7 से हमारे पास ये आएगा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ इट विल चेक फॉर दिस. सो इफ j इज नॉट इक्वल टू n minus 1, तो j इज नॉट इक्वल टू n minus 1 है, तो ये सबसे पहले लाइक अभी j की वैल्यू जो है, ओके लेट्स गो फॉर दिस वन ओनली. सो j की वैल्यू अभी 0 है. सो 0 के लिए इट विल प्रिंट 1 कॉमा, बिकॉज कॉमा यहाँ पर है.
एंड देन इट विल प्रिंट 1, फिर से कॉमा, देन यहाँ पे j की वैल्यू 1 थी, अब j की वैल्यू 2 है विच इज ऑल्सो लाइक n-1, n की वैल्यू 3 थी सो 2, तो यहाँ पे इट विल जस्ट प्रिंट -1, and similarly for the second row also, and similarly for the third row also. Okay, so it is basically printing the difference in just like this manner. ये तो easy question था, clear हो गया सबको? हमने एक से ही like हमें पता चल गया एक list से ही. Okay, now this question ये भी हमने करा था है ना, returns the total number of even elements, ये तो हमने अभी करा था फिलहाल. Let's move on. Now this one, okay, we have to write it into a file. ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा था वैसे. Well, it's up to you if you want to. ये अभी हमने करा ही था स्कोर्स वाला तो. And this one, ये थोड़ा देखते हैं. This is an interesting question. So we have a list here 4713, s of l is empty while a is empty. Okay, a is not empty. x पे हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब हमारे पास पहले आ गया 4, then for I in a, if I is less than x, okay, that means ये कंडीशन किस किस एलिमेंट के लिए ट्रू होगी? I पे मेरा आएगा 4713, ये कंडीशन द लाइन नंबर 6 इट विल बी ट्रू फॉर विच एलिमेंट्स, लाइक कौन से एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी? एनीबॉडी? 1 and 3. यस, 1 and 3. ओके, तो 1 and 3 पे ओके, इफ i इज लेस देन x, सो x पे हमारे x को हम असाइन कर दे रहे हैं i. ओके, सो इट इज देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली a डॉट रिमूव x. ओके, हम x को यहाँ से हटा दे रहे हैं. आफ्टर गोइंग दैट मीन्स हमने यहाँ से 1 हटा दिया, तो हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास आ गई 471, सॉरी 473, है ना? एम आई राइट? एम आई करेक्ट? ओके, देन हम दोबारा से ये चीज़ करेंगे. x पे हमारा आएगा 7 एंड उसके बाद यहीं x की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे चेक होके x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड a डॉट रिमूव करके हमारे पास ओके, जो हम रिमूव कर रहे हैं ना उसको हम s ऑफ l में अपेंड भी कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा सबसे पहले ऐड हुआ 1, देन हमारा ऐड होगा 4. ओके, वाई 4? क्योंकि हमारे पास लिस्ट ओके नॉट 4, देन हमारा ऐड होगा 3. ओके, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास 473 में 3 सबसे छोटा है, सो x पे हमारे पास 3 आ जाएगा एंड 3 ऐड होगा. देन उसके बाद थर्ड आइट्रेशन पे व्हेन वी हैव अ लिस्ट दिस, देन हमारा 4, देन हमारा 7. वी आर रिमूविंग द मिनिमम एलिमेंट and we are like adding that minimum element here. Basically we are kind of some kind of sorting we are doing. Am I right? So 1 3 4 7, this is the output. सबको clear हो गया? All right. Then min max, ये तो अभी हमने करा था. Random. See, रैंडम में रैंडम जो होता है इट विल कंटेन बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू. ओके, जो रेंज है, रेंज डज नॉट कंसिडर द एंड वैल्यू, इन रैंडेंट विल कंसिडर एंड वैल्यू एज वेल. सो इट इज आस्किंग कि हमें 10,000 इंटीजर्स चाहिए, जो इंटीजर्स चाहिए एंड दैट इंटीजर्स शुड बी रेंज फ्रॉम 1 to 10, बोथ एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड. दिस इज करेक्ट राइट? हमें रैंडम चाहिए एंड ओके, व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? The second one, कोई बता सकता है? Wrong range. Okay, can anybody speak like why this is not correct? The second one. So it's the opposite, right? Yes, it is opposite. It is having only 10 like 10 numbers which are whose range is from 1 to 10,000. देन ये यहाँ पे द रेंज इज डिफरेंट 0 to 11. यहाँ पे ऑल्सो
randint includes the 10 randint includes the end as well. Okay, so make sure आप इसका ध्यान रखना. ये भी काफ़ी लोग ये भी टिक कर देंगे, बट randint जो है स्टार्ट और एंड दोनों को इंक्लूड करता है. ओके, सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, Yes, sir. बाकी सबको क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव टू दिस. ये तो हमने करा ही था. ये ओके, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को भी लाइक कराया था एक्सेप्शनल हैंडलिंग में. सो फॉर द फर्स्ट वन, व्हाट इट विल रिटर्न? x इक्वल्स टू क्वोशंट स्ट्रिंग में 10,5 Strings. Not divide strings. cannot divide strings, right? For the second one, Division by 0 is not allowed. okay, and for the third one, 2. okay, return will be true. Yes. अब मुझे एक बारी ये बताओ कितनी लाइंस प्रिंट होंगी टोटल, including the last 15th line as well? 6. 6. Are you sure? Cannot divide. Probably 4. 4 lines. देखो, okay, see, for the first one, एक तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी कैन नॉट डिवाइड स्ट्रिंग्स एंड फाइनली, राइट? फॉर द सेकेंड वन ये वाली लाइन एंड फाइनली. सो 4 होगी लाइन्स. देन फॉर दिस ओनली okay, here we are not printing anything, but here we are printing this. So 5 lines यहाँ पे हो गई एंड यहाँ पे 6th line हो गई. 6 okay. Yes, 6 होंगी. You were correct, of course. I was like just checking. See, answers बहुत वेरी कर रहे हैं यहाँ पे. 15175. ओके, सो इसका थोड़ा ध्यान रखो, बाकी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. सो यस, अगर आपको पता है कितनी लाइंस प्रिंट होंगी देन दैट इज फाइन. ओके, इज इट इजी? लाइक इजी था ये? आपको हमें बस चेक करना था कि कितनी लाइंस प्रिंट होगी बाय 2 इन लास्ट, क्योंकि वी आर प्रिंटिंग x, वी आर रिटर्निंग हेयर q एंड प्रिंटिंग इट हेयर. Okay, this is valid na? 10 divided by 5, it will give us 2, and 2 is we are printing here. And now this one, so this is having the word count, frequency is having word count, right? तो 1 के रिस्पेक्टिव हो जाएगा 3, 2 and 3 के रिस्पेक्टिव हो जाएगा 1 1. yes, finally will print always, doesn't matter आपका एरर आ रहा है, कोड चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, फाइनली हमेशा प्रिंट करेगा. ओके, वर्क रन करेगा, नॉट प्रिंट, फाइनली हमेशा रन करेगा. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा. ओके, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है ना, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ क्लियर. सी, दिस इज द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन. अगेन जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, गो फॉर द लूप. लाइक दिस इज द आउटर लूप, लेट मी राइट इट हियर नाउ. तो सबसे पहले हम लूप, ओके, सबसे पहले मैं एक फ्रिक नाम की डिक्शनरी बना लेता हूँ एंड आई शुड इंक्रीज द फॉन्ट साइज. आई होप नाउ इट इज विजिबल. फ्रिक नाम की आई हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी. देन आई विल डू फॉर वर्ड इन L. ओके, each word is this specific word. Then what we are doing is fric of word equals to L dot count word. Okay, this is what we are doing. ये जो third line है ना, ये frac of word, it is being replaced with this word part. Like this word is same as this word here. All right, is it clear? सबसे पहले हम की लिख रहे हैं, देन हम कॉलन लिख रहे हैं जो डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है, देन हम वैल्यू लिख रहे हैं. ओके, सबको क्लियर हो गया ये? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बाकी तो यू नो इट इज द फ्रीक्वेंसी. Now this will be the answer, that is fine. Now let's move on. Given a string as, find the first occurrence of the substring not and bad. If not is followed by bad, then replace the whole note till bad. Okay, if the string is like
this dinner is not that bad. So yes, so then the function should return the dinner is good. Okay, so basically not से लेकर जो है replace the whole not till bad string with the good and return the updated string. So अगर तो हमारा not पहले आ रहा है, so find the first occurrence. Okay, then the function should return the string the dinner is good. Okay, we have to find the first occurrence. Why it is returning this? Okay, that is fine. तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देनी है. हमें सबसे पहले नॉट और बैड को चेक करना है. सबसे पहले तो नॉर्मली चेक करना है कि नॉट बैड से पहले आ रहे हैं नहीं. तो we can check via this, like b greater than n, right? B greater than n means b is having the index of bad, n is having the index of not. So अगर not पहले आ रहा है तो n का इंडेक्स छोटा होगा. Am I right? Look for this one, this particular b greater than n. अगर not पहले आ रहा है तो not का इंडेक्स छोटा होगा compared to the bad. Am I right? Yes. Then it is just checking if n is not equal to -1 and b is not equal to -1. -1 तभी आता है if that particular string is not there. Okay, and उसके बाद what we are just doing is we are simply replacing that with जो भी हमारे पास not तक का हम पूरा वर्ड ले रहे हैं उसमें हम good डाल रहे हैं as it is written here कि then replace whole not till bad substring with good and return the अपडेटेड स्ट्रिंग. सो जैसे यहाँ पे नॉट दैट बैड की जगह गुड आ गया था. ओके, सो यहाँ पे वही हो रहा है. नॉट से पहले तक हम पूरा सेंटेंस ले रहे हैं, देन हम गुड डाल रहे हैं एंड बैड के बाद वाला हम सेंटेंस ले रहे हैं. वाई b+3? कैन एनीबॉडी टेल? b+3 क्यों कर रहे हैं? वाई नॉट b डायरेक्टली? Okay, no. Because there's only one word between not and bad, right? That's why. No. See, I'll take this correct one only. Why correct one? आप लोग like we can run also, but let's just like do a little bit faster as of now. So see, abhi if I consider this sentence only, this dinner is not that bad. So this dinner is not that bad, and let me like increase it. Okay, let's write the index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. नॉट का इंडेक्स आ रहा है 15 16 17 18 19 20 21. ओके, मैं बहुत मेसी वे में लिख रहा हूँ बट आई विल टेल यू 23 24 25. ओके, नॉट जो है हमारा, इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट नॉट, व्हाट वी विल डू इज वी विल डू लेट्स से दिस इज s, सो वी विल डू s ऑफ 15 till 18. ओके, नॉट स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 से. ऑलराइट, एंड बैड हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 से. सो 23 till 26. ओके, we'll have the not here. ये हमारे पास नॉट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बैड आ जाएगा. नाउ व्हाट फाइंड विल डू, फाइंड पे अगर हम कुछ वर्ड डालते हैं ना एस डॉट फाइंड नॉट, सो इट विल चेक फॉर द होल वर्ड ऑफ कोर्स, जहाँ पे वर्ड मैच कर जाएगा वो, बट ये मल्टी इंडेक्स थोड़ी रिटर्न करेगा. लाइक ये 3 इंडेक्स होंगे ना इन तीनों के अलग अलग, बट हमारे पास जो है एक ही वैल्यू आएगी, दैट विल बी द इंडेक्स ऑफ n. n का इंडेक्स क्या है 15. सो n स्टोर करेगा हमारा यहाँ पे 15 and similarly b स्टोर करेगा हमारा 23. Sorry to interrupt. So what is the difference between index and find then? Okay. Both are doing this. Index पे if we are passing some word which is not there in the exact string, तो index will give us index error. Okay, but find will give us -1 अगर वो word exist नहीं करता. So this is the difference. All right, is it clear to everybody? कि what So will find will give just the start index number. Yes, just the starting index. Okay.
So yes, अभी now it is checking कि दोनों -1 तो नहीं है, that is of course we have to check. Okay, then b is greater than n. b is greater than n, that means bad हमारा बाद में आ रहा है. Am I right? Okay, am I right now? Like if you guys see. Yes, sir. Okay, now s of till n, so n का हमारा इंडेक्स है 15, तो 15 तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब हमारा यहाँ तक पूरा सेंटेंस जो है आ जाएगा. दिस पर्टिकुलर इंडेंस sentence will be stored in this, will be there. Okay, then उसके बाद हमारा गुड आ रहा है, यहाँ पे स्पेस भी है. ओके, देन हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, s of b plus 3. वाई b plus 3? सी, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है. b की लेंथ क्या है, 3 है, और बैड की लेंथ. एंड जब हम s डॉट फाइंड बैड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास b का इंडेक्स मिल रहा है, दैट इज 23. ओके, तो हमें जो है ये इस पूरे वर्ड को स्किप करना है. सो दिस इज ऑफ 3 लेंथ, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग 23 plus 3 till end, which is s of 26 till end. Okay, so that's why यहाँ पे exclamation mark आ रहा है. Now we are just like concatenating the string. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay, सबको clear है? Just give a thumbs up if it is clear to everybody. All right. So yes, बाकी you can, like, of course you should like take this example and go through all the particular code. हर एक कोड के साथ ऐसे ट्राई करना, आपका हो जाएगा. Okay, now next one, this we have done already, right? And this, accept the two strings as input, print ascending, the first string comes before the second string in alphabetical order. Okay, so Java Python से पहले आता है if we consider the alphabetical order. Yes, so ठीक है, this code is correct if we see just string is less than string of 2, है ना? And this is wrong, this is opposite. And we can do this by this as well, कि हमें input directly हम यहाँ से भी input ले सकते हैं. Okay, and this is the opposite, so it is not correct. Now this, ये भी same है, just we are creating more variables. Okay, so same code है, just in different you can say syntaxes. किसी में ज़्यादा variables define कर रहे हैं, इसमें हम एक भी variable define नहीं कर रहे. That is the difference. Is it clear to everybody? Okay. Without any error, ये भी हमने देखा था. रिवर्स नंबर 3 4 5 6. ओके, हमें रिवर्स करना है, ये तो बहुत ईजी है. लाइक एक तो ये वे है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका रिवर्स कर दें, एंड एक तो ये है कि डिजिट के साथ लाइक हम एक एक क्लास डिजिट लें उसको ऐड करें. ओके, ये तो हमने लाइक अभी हमने इसका कोड भी देखा था पहले, सो आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस. इज दिस क्लियर, like how can we reverse a number? Okay, let's move on. So concatenate that accept two lists and returns the concatenated list p plus q. बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली p plus q भी कर सकते हैं, एंड हम ऐसे भी कर सकते हैं for x in p, for x in q, एंड सारे एलिमेंट्स को हम r में डाल रहे हैं. दिस इज द करेक्ट कोड, राइट? एंड नाउ दिस, ओके, रिटर्न द कंकैटिनेटेड लिस्ट p plus q, मतलब p पहले आएगी फिर q लिस्ट आएगी. नाउ व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? First taking Q and then P. Yes, and this one here we are creating a copy and then going to the p. Okay, why this is not correct? The third one. Again Q after P. No? Yes, and this is correct क्योंकि हम पहले p की कॉपी कर रहे हैं and then we are adding all the elements of q. Okay, बहुत easy question था, है ना? You just have to check for each and every like code. आप एक बार ही देखोगे, आप क्लियर हो जाएगा. m into n matrix and store the, create the transpose of the matrix. Well, बहुत बार ही किया हुआ है. Okay, transpose basically shift the like matrix kind of, if we have a matrix something like this.
Question 13 of MOOC. Can you give the question ID? 789. ट्रांसपोज इसका होगा 147. डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं ओके ट्रांसपोज में, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं. 4 रिप्लेस हो जाएगा 2 से एंड 2 4 से. 7 रिप्लेस हो जाएगा 3 से एंड यहाँ पे 3 आ गया. 6 और 8 रिप्लेस हो जाएंगे आपस में, सो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया. दिस वी हैव टू डू. बहुत बेसिक है. मैट्रिक्स जो है मतलब वी जस्ट हैव टू राइट द मैट्रिक्स इन ओपोजिट मैनर, लाइक जो इंडेक्स है हमें ओपोजिट मैनर में लिखना है. ओके यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, n इंटू एन दिया. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो थोड़ा सा कोड में डिफरेंस होता, बट दैट इज इट. हमें बस उसको ओपोजिट मैनर में करना है. लाइक m ऑफ i ऑफ j की जगह वी आर डूइंग m ऑफ j ऑफ i. सिमिलरली यहाँ पे भी m ऑफ j ऑफ i. यहाँ पे हम m ऑफ i ऑफ j कर रहे हैं तो ये इट विल रिजल्ट इन द सेम मैट्रिक्स, इट विल रिजल्ट इन द ट्रांसपोज. यू कैन लाइक रन दिस कोड, मतलब आप एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके इफ यू डू ऑन एनी मैट्रिक्स यू विल गेट द आइडिया कि हाउ इट इज वर्किंग. ओके बाकी इफ यू नो व्हाट इज ट्रांसपोज एंड हाउ टू डू देन तो क्लियर होगा. यस प्रीति. So why is the index taken at -1? Okay. M underscore t. सी हम एक लिस्ट अपेंड कर रहे हैं राइट. वी आर Yes, sir. अपेंडिंग द लिस्ट. So we are taking that appended list here. अगर what we can do more here is हम एक यहाँ पे empty list बनाते हैं, उस लिस्ट में अपेंड करते हैं, देन वो लिस्ट को m अंडरस्कोर t में अपेंड करते हैं. ओके हम बस पहले अपेंड कर दे रहे हैं लिस्ट में, लिस्ट को हम पहले अपेंड कर रहे हैं बजाय कि हम बाद में. सो दिस इज द डिफरेंस. Okay, okay, sir. So yes, that is it. And कॉलम सम ये तो हमने करा ही था, लाइक ऐसा क्वेश्चन राइट, कॉलम सम निकालने का. सो ये भी हमने करा था सम वर्ड वाला है ना. देन ये भी हमने करा था डू समथिंग पाइथन वाला, पाइथन का एवरेज आ रहा. एंड ये भी हमने करा है, एस में 25 आएगा एंड ये भी करा था. सो एंड दिस इज ऑल्सो लाइक वी हैव डन. एंड प्रोडक्ट वाला ये भी हमने करा था. हेंस फिनिश्ड. Okay, I've shared the question with you on WhatsApp. Okay, I can't open WhatsApp here. Can you tell the question ID? Can you paste it here? Question ID जो है, this is the question ID. और क्वेश्चन नंबर 13 तो यहाँ पे नहीं होगा आई डोंट थिंक. ओके 26 मिनट्स, दैट इज ग्रेट. सो सबको क्लियर हो गया लाइक ठीक है. 26 मिनट्स में हमने काफ़ी क्वेश्चन स्किप भी करे क्योंकि हमने ऑलरेडी करे थे. बट नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? So he's referring to the mock test, so not PYQ. ओके मॉक. मॉक तो मैं ऐसे ओपन भी नहीं कर सकता, आई डोंट इवन हैव द मॉक. ओके आई विल टेल यू द सॉल्यूशन. ओके मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा. आई हैव रिसीव्ड द डीएम, आई हैव चेक्ड इट. लाइक आई कांट ओपन इट हियर सो दैट्स व्हाई. ओके सो सबको क्लियर हो गया. हमने 3 PYQs कर लिए आज, ठीक है. बाकी आप और भी PYQs कर सकते हो. दिस इज़ द एस ग्रेड वेबसाइट. यहाँ से चेक दिस PYQs पाइथन में जाके एंड वी कैन डू द PYQs. किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट किसी भी चीज़ में? ओके वी हैव क्रिएटेड अ लैडर. सो किसी को कोई डाउट है इन एनी टॉपिक, एनीथिंग? All right, so then that is it. Let's end the session then. And thank you guys for attending my sessions till now. Sir, Mm-hmm. First of all, thank you so much for this session. It was very You're helpful. welcome. And secondly, I wanted to ask when you would be uploading this on YouTube because I missed certain questions. Okay, no worries. So currently it is 2:35. So the processing will take around 1 hour. So it will be uploaded before 4 p.m. Okay.
All right, So great. It would be on your channel, right? yes, it will be on. So I'll upload this recording of this channel in my YouTube channel. This is my YouTube channel. You can just type Parampreet Singh or Param3021 and you will Okay, get cool. it. And Yeah. if you want to, like, if anybody of you want to clear any certain topic like recursion, exceptional handling, or object-oriented programming, you can watch this session number 26. Okay. And rest, if you want to clear any other topic, then you can refer to my Python sessions, my Python playlist. If I yes. So this is my Python playlist. Here I have covered everything. You guys can go through it if you want to cover any specific topic in detail. All right, so that is it then, and all the best, guys, for the end term. Okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome, and इसकी recording कितने बजे तक आएगी? I'll upload it till 4 p.m. Okay, cool. Thanks, man. Bye. Okay. Welcome, and all the best, guys, and thank you for staying till now. All the best. Let's meet in future, maybe in some diploma subjects. अगर आप में से कोई MLP तो कोई भी नहीं लेगा. Let's see क्या करते हैं future में और. And I will I'll plan that video. Okay. Thank you, Shri. I'll plan that particular thing for the which subjects you should take for the diploma. Okay, how you should approach and everything. So that Yes, is it, sir. guys. When you'll be uploading that video? Because this is my last term.